Namaste and hello to everyone. Welcome back to Edvritos. Today we are going to try something new. We are going to try learning English through poetry. बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टोरीज रीड करते हैं. They read different genres of novels, but there are very few people who read poetries. And trust me, this would be my suggestion as well to my students. Poetry, through poems, you learn English in a very fun way. Plus, you get to know a lot about the other devices used in the poem. So, today we are going to start this series where I'll be reading out different poems. And today I'm going to read I Remember by Thomas Hood. But before we get into our video, please make sure you like, share, and comment after you watch the video. And if you are new here, don't forget to subscribe to the channel as well. So as I was telling you, we'll be reading I Remember, which is one of my favorite poems by Thomas Hood. Thomas Hood was a great English poet and humorist, and this poem, I Remember, is one of the best literary pieces known for its themes of childhood and recollection of joys. It was first published in 1844, and in this poem, the poet recalls his childhood memories and compares his childhood joy with his gloomy present. So let's start without wasting any more time. We are starting with the stanza 1. I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wing too soon, nor brought too long a day, but now I often wish the night had borne my breath away. So in this first stanza, poet is telling us about the house where he was born. He's also telling us that the house where he used to live had a window, and from that little window the sun used to peep in. अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि peep वर्ड का मतलब होता है झांकना. सो झांकना इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी, और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को ध्यान से देखा है, सो व्हेन वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू अ नॉन लिविंग थिंग, दैट्स पर्सोनिफिकेशन. सो यहाँ पे हम सन को पर्सोनीफाई कर रहे हैं, दैट सन मेरे रूम में झांकता था. सो बेसिकली इट मीन्स द सन रेज यूज टू गेट इन टू हिज रूम अर्ली इन द मॉर्निंग. ही नेवर केम अ विंग टू सून और ब्रॉट टू लॉन्गर डे. इस लाइन का मतलब ये है कि सन हमेशा टाइम पे होता था, ना ही बहुत जल्दी ना ही बहुत लेट. वो हमेशा मेरे रूम में टाइम पे आ जाता था, और शाम के टाइम भी वो हमेशा टाइम से चला जाता था. सो एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बोर्न माई ब्रेथ अवे. बट अब वो करंटली जब ये पोम लिख रहे थे, तब वो विश कर रहे हैं कि काश वो रात जो मेरे बचपन की रात थी, और वो रात आखिरी होती और मेरी डेथ हो जाती. वो वाई इज़ ही विशिंग फॉर हिज डेथ? बिकॉज मे बी ही इज़ अनहैप्पी विद हिज करंट लाइफ, राइट. तो वो विश कर रहे हैं कि काश वो आखिरी समय होता मेरी ज़िंदगी का, और उसी टाइम मेरी डेथ हो जाती, बिकॉज ही इज़ नॉट very happy living the current life, being an adult. Stanza 2. I remember the roses red and white, the violets and the lily cups, those flowers made of light. The lilacs where the robin built and where my brother sat, the laburnum on his birthday, the tree is living yet. In second stanza, poet is talking about all those flowers which were there in his garden in front of his house. There were roses, there were violets, there were lily cups. He's also talking about the lilacs where the robin built its nest. Robin is a bird. Then he's also talking about laburnum. Laburnum is also a beautiful tree with beautiful flowers. And the laburnum was set by his brother. So on his brother's birthday, the brother set the laburnum tree, which is still living. मतलब जो उन्होंने अपने ब्रदर ने अपने बर्थडे पे जो पेड़ लगाया था, वो पेड़ अभी भी है जब वो पोइट्री लिख रहे हैं उस टाइम पे. सो ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट. Coming to stanza 3, I remember where I used to swing and thought the air must rush as fresh to swallows on the wing. My spirit flew in feathers then that is so heavy now, and summer pools could hardly cool the fever on my brow. So in this stanza, he is telling us about the air जो उन्हें बहुत फ्रेश लगती थी जब वो एक छोटे बच्चे थे, एंड दैट एयर वेन एवर ही यूज टू स्विंग, जब वो झूले पे झूलते थे और वो जो हवा उनके फेस पे लगती थी, दैट एयर यूज टू बी सो फ्रेश. बट अब वही सेम हवा, जो सेम एयर, अब वो जब वो एडल्ट हो गए हैं, जब वो बड़े हो गए हैं, तो वही जो सेम हवा है वो
उनको बिल्कुल भी फ्रेश नहीं फील होती है. ही फील्स एज इफ दैट एयर इज कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देयर इज सम काइंड ऑफ some sort of heaviness in that air. He's also saying that उनकी जो spirit थी, जो उनकी जो body थी, वो उनको बहुत light लगती थी as feathers. एक पंख की तरह उनको वो बहुत लाइट फील होती थी. बट वही अब उनको अपने अंदर एक बर्डन फील होता है, एंड दैट बर्डन कैन बी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हैज़ नाउ ऑन हिज शोल्डर्स. इट कैन बी ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ही इज़ फेसिंग इन हिज adulthood. So here he is comparing the childhood and the adulthood, कि जब एक छोटा बच्चा होता है उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं. सो दैट एट दैट टाइम अ चाइल्ड फील्स सो लाइट विद इन, एंड एज सुन एज ही ग्रोज अप, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती जाती हैं, द बॉडी स्टार्ट्स टू फील हैवी. एंड ही सेइंग दैट अब उनकी जो बॉडी, उनकी जो स्पिरिट है वो इतनी हैवी हो चुकी है विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट नथिंग कैन काम इट डाउन. Even the fresh air or the summer pool, nothing can calm the fever on his brow. Let's come to the last stanza. I remember the fir tree dark and high. I used to think their slender tops were close against the sky. It was a childish ignorance, but now it's a little joy to know I'm farther off from heaven than when I was a boy. In the last stanza, poet is saying that when he was a child, जब वो एक छोटे बच्चे थे, तो उनको ऐसा लगता था कि जो फर ट्रीज़ है वो बहुत ही ऊंचे हैं, एंड दोज टॉप्स, जो फर ट्रीज़ की जो टॉप्स हैं वो स्काई को टच कर रही हैं, दैट दे आर सो क्लोज टू द स्काई एंड दे आर टचिंग द स्काई. तो इट वाज अ टोटल चाइल्डिश इग्नोरेंस. मतलब वो उस टाइम इतने इमेच्योर थे कि उन्हें ये नहीं समझ थी कि जो ट्रीज़ हैं वो स्काई को टच नहीं कर रहे हैं. सो ही इज़ टेलिंग अस कि अब जो उनको पता चला है कि एक्चुअली में हम या फिर ट्रीज़, हम काफ़ी दूर हैं उस हेवन से, उस स्काई से, एंड ऑल दैट ही यूज्ड टू थिंक वाज जस्ट हिज चाइल्डिश इग्नोरेंस. So finally he realizes that there is a very huge difference between being a child and being an adult. And childhood में हम इतने ज़्यादा immature होते हैं कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं, हम उनको किसी और तरीके से समझते हैं, और as soon as we grow up we realize a lot of things. And this is what is given in the poem. He is totally recalling his childhood and he is missing that childhood. He is basically wishing to go back to that place, and he is also wishing to die because he is not happy with his current life. I hope you understood the poem. I hope you read it with me. If not, then you can watch the video again, and I'll be back with another amazing poem. And till the time, please make sure you like, share, comment, and please send this video to as many people as you can. Also, please subscribe to the channel. We'll meet soon in the next video. Take care. Bye bye.